welcome to our Will India podcast. This is where we give life to stories and come together to talk about the tales of human journey and the bumps along the way. We will be joined by some incredible folks, everyday heroes who stare down the big challenges of life and still have a smile on their face. Each episode delves into the understanding, the impact of mobility or independence, and takes a more focused approach to how small changes can make a difference. We're excited to have you on this journey with us as we move more and live more. Welcome to today's episode, Dr. Neha Shukla. Dr. Shukla is the distinguished senior physiotherapist. She is also masters in orthopedics and she has 14 plus years of experience and she has treated 62,000 plus patients. Welcome to the Will India podcast, ma'am. Thank you so much. Starting with the first question, how did you got inclined towards this profession and orthopedics? So answering that, I guess when I was in my college first year, when I was studying biology and science and everything, I had a lot of inclination and interest towards orthopedics. So जब मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही थी in the first year itself, मैं एक orthopedician के under सीखने जाती थी. Being in first year, we were not allowed to touch the patients or do anything much. But then एक corner में खड़े होके I used to just observe and see कि how he is treating the patient, how is he dealing with the patient's X-rays and all. So before college could teach me, I learned couple of things from there, and therein I guess there is no stopping. And then मेरा inclination or interest बढ़ता गया as the more I studied and went into it. And I did masters in orthopedics, and I am just loving it. How do you identify the unique needs of physical impaired people? When it comes to impairment, you have to understand कि impairment किस type की है, physical, mental, then physical maybe is it motor, it is sensory. तो उसके हिसाब से you have to decide the line of treatment, the needs of the patient. So basically you talk to the patient and you try to understand कि उसको ज़रूरत क्या है हमसे, what is the patient and the relatives looking for. So that is how we decide कि क्या करना है. तो listening and understanding and talking to the patient according to their needs is very important. So, what are the main challenges in treating patients with physical impairment? See, challenges come in wherein a person loses the willpower or the interest of getting well and getting better. क्या होता है when you're impaired, अगर आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, you're not able to do a certain activity जो कि आप पहले नॉर्मली कर सकते हो, जैसे नॉर्मल इंसान करते हैं. तो कई बार पेशेंट लूज कर देता है वो चीज़ कि अच्छा जाने दो, अभी तो मुझे ही हो गया, अभी ज़िंदगी ऐसी कटनी है, स्पेशली विद द एल्डरली पीपल. सो दैट विल पावर इफ इट इज़ लॉस्ट, दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ चैलेंज. तो वहाँ पे वर्क करना पड़ता है हमें. तो एज डॉक्टर्स सिर्फ ट्रीटमेंट पे ही नहीं, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द काउंसलिंग पार्ट एज वेल, एंड विच इंक्लूड्स लाइक एवरीथिंग, टॉकिंग टू द पेशेंट, टॉकिंग टू द रिलेटिव्स एंड मेकिंग द पेशेंट अंडरस्टैंड कि नहीं, this is just a phase and it will pass and you'll be all good and you'll be back to what you were. So, how do you communicate with relatives of people who have physical impairment? Talking to the relatives and making them understand is a very crucial and important part. See, what happens is, I believe half of the battle is won here if a person decides mentally कि मेरे को ठीक होना है, या एक अंदर से एक विल पावर, एक इच्छा आती है कि हाँ मुझे वापस पहले जैसे ठीक होना है. तो वो हमारा काम ईजी हो जाता है, 50% ईजी हो जाता है. अभी वो मेंटली आने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके रिलेटिव्स का, आपके फैमिली का, आपके लव्ड वंस का. तो कई बार अगर पेशेंट फिजिकली इम्पेयर्ड है, पकड़ लो पैरालिसिस है, हेमीप्लीजिया है, पार्किंसंस है, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे यू फिजिकली इम्पेयर्ड, आप बेड रिडन हो फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, तो एक फीलिंग आ जाती है कि मैं बोझ हूँ मेरे घर पे, या फिर जो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, किड्स. और अगर सामने वाले ने भी कभी गलती से जाने अनजाने आपको कुछ बोल दिया, या फील आ गया आपको कि अच्छा इसको मैं बॉदर कर रहा हूँ, अब तो मैं इसके ऊपर हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ, सो दैट बिकम्स अ मेंटल ब्लॉकेज. एक नेगेटिव इमेज आ जाता है, नेगेटिव फीलिंग आ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट हाउ आई कैन मेक द अदर पर्सन फील. तो बहुत ही ज़रूरी है रिलेटिव से बात करना. सो हाउ आई टेक दिस अहेड, आई मेक द पेशेंट एंड द रिलेटिव सिट टुगेदर एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों एंड से क्या है, नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड ऑल. कई बार क्या होता है, रिलेटिव्स बोलते हैं कि हम इन्हें बहुत बोलते हैं, ये सुनते नहीं हैं, ये करते नहीं हैं, ये दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेते, ये एक्सरसाइजेस नहीं करते, ये फॉलो नहीं करते फिजियोथेरेपिस्ट ने जो बोला. और पेशेंट के अपने कुछ होते हैं चैलेंजेस कि मैं ट्राई करता हूँ बट मेरे से हो नहीं रहा, ये
लोग मेरे को पुश करते हैं, देन इरिटेशन भी होता है. आप सोचो, आपका हाथ एक दिन खाली मैं ऐसे बांध के रखूं, विल यू नॉट गेट इरिटेटेड? एक दिन Yes. खाली आप मूव नहीं कर पाओ. सो दैट पर्सन इज डीलिंग गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. तो उस टाइम पे यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट. तो पहले तो साथ में बात करके आई ट्राई अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड साइकोलॉजी फ्रॉम बोथ द एंड्स, and then I try to speak to them individually, wherein I'm speaking to the patient alone, where there is nobody in the room, कि उसके क्या challenges है, what is he or she going through, उनके क्या blockages हैं, कहाँ पे वो battle lose कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा effort लगाना है. हमें से मेरा मतलब है doctor and the relatives and the people जिनके साथ वो रह रहे हैं. And then I talk to the relatives individually कि this person is going through this, आप imagine भी नहीं कर सकते हो उनका pain, what he Correct. or she is going through. Correct. So we can do the best as a team. तो तब मैं individually उनको explain करती हूँ, and together I try to get through the process. Yes. So ऐसा कोई इंसिडेंट है या कोई एक्सपीरियंस है जिसने आपको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म फील करवाया है? Lot of things. I mean, whenever I make a person walk who is not able to walk, or whenever I make a person do an activity जो वो पहले नहीं कर पा रहा है, कोई भी चीज़, या if somebody is struggling from weight loss ही पकड़ लो, जो बहुत सालों से stagnant है, and if I'm, कोई भी रीज़न हो, इफ़ आई एम एबल टू ब्रिंग दैट स्माइल ऑन दैट पेशेंट्स फेस एंड सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. सो वो मिल जाती है मुझे विद माई प्रोफेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स. यस, करेक्ट. आपने मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स किया है, तो मुझे पूछना था, सपोर्ट टू फ्रॉम योर फैमिली हमेशा कंसिस्टेंट रहा है. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट? सपोर्ट ऑब्वियसली, अगर आप मुझे आज देख रहे हो यहाँ पे, वट एवर लिटिल आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, वट एवर आई एम, तो उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स का है. स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड, तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स, पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके फर्स्ट टीचर्स होते हैं. दे गिव यू द फ्रीडम, दे एनकरेज यू कि ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट, वी आर देयर, हम हैं, तुम करो. तो इफ़ दैट पर्सन यू हैव इन लाइक कि तू कर, मतलब जो भी करना है, आई एम देयर. सो माई पेरेंट्स वर दैट सपोर्टिव. They gave me wings to fly, and they gave all the freedom and opportunity and everything. सारे पेरेंट्स करते हैं आई थिंक अपने बच्चों के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं. तो पेरेंट्स से सपोर्ट मिला सब कुछ. एंड देन एज अ वुमन, इट बिकम्स अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट व्हेन यू गेट मैरिड. तो मैरिज केम इन, जहाँ पे आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट लाइफ पार्टनर आई वुड से, एंड द इन लॉज ऑफ कोर्स. बिकॉज कोई भी औरत शादी के बाद, इफ़ शी इज़ वर्किंग एंड इफ़ शी इज़ शाइनिंग एंड ग्रोइंग, आई थिंक बहुत बड़ा हाथ होता है फैमिली का. अगर आपके घर से आपको कांस्टेंट फ़ोन आ रहा है कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किधर हो, कब आओगी, या कुछ भी चल रहा है, यू हैव समथिंग बैक इन द माइंड होल्डिंग यू, स्ट्रेस है, सामने से आपको नहीं सपोर्ट मिल रहा, यू विल नॉट बी एबल टू शाइन ब्राइट. आप एक मीडियोकर बन के रह जाओगे, आप कहीं ना कहीं 100% नहीं दे पाओगे अपना काम में. एंड व्हेन यू आर नॉट गिविंग दैट 100%, इट शोज इन योर वर्क. तो मैं वही बोलती हूँ, वो मीडियोकर बन के रह जाता है. भीड़ में एक इंसान को चमकने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है. दैट एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए उसको मेंटली पूरा वहाँ होना ज़रूरी है. यू हैव टू गिव योर 100%. 100% के लिए यू हैव टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड. दैट पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम फैमिली एंड योर लव्ड वंस. सो आई हैव बीन extremely blessed with the life partner and the family, my in-laws, everybody. Because अगर मैं काम कर रही हूँ बाहर, इतने दिन भर मैं बाहर हूँ, आई नो माई किड इज़ देयर सेफ, आई हैव अ फैमिली, अ लविंग इन-लॉज एंड एवरीबडी, जो कि बहुत खुश होते हैं मेरी अचीवमेंट में, अप्रिशिएट करते हैं. एट द एंड ऑफ डे एवरीबडी वॉन्ट्स अप्रिसिएशन एंड दे लाइक अप्रिसिएशन. सो एक ऑफ कोर्स एक एनवायरनमेंट ऐसा है हेल्दी, जहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार मिलता है, देन ओनली आई एम ग्रोइंग. Yes. So you said that you have a kid. Like, so how did you manage your, pregnancy with being a physiotherapist? I had a beautiful journey. I am a mother of a 7-year-old boy. And throughout my pregnancy, I've been working. Till the last day that I delivered, I remember I
took rounds in the hospital. I saw my IPD patients and did all the entry and everything. And then I went to my gynec. I said, "Chalo, ab kya karna hai bolo." So that is what my journey. I was always active. I used to drive and go to the hospital, see the patients, come back, and I was always active. Did all the exercises जो कि करनी चाहिए. I used to also take antenatal postnatal classes while I was pregnant. That I've been doing for many years now. कि pregnancy में क्या exercise करनी चाहिए, pregnancy के बाद क्या exercise करनी चाहिए for a female to get back to what she was. So I've been that active woman always. So that journey was good, but हाँ challenges थोड़े से होते हैं at times. You get tired and stuff, but then yes, it was a beautiful journey, and now everything is sorted. As I told you, I have very cooperative, understanding in-laws who support and encourage me. They are the first one to clap for me all the time, so it is all good. And how did your Instagram journey start? Instagram journey, actually, I used to post normal pictures जैसे हम सब normal अपने personal profile पे करते हैं. Then one day I just started posting few informative videos and reels regarding health and exercises and stuff. So I started getting a lot of appreciation and love from everybody. कुछ ऐसे लोगों का कॉल और मैसेज आने लगा टू अप्रिशिएट जिनसे कभी सालों में भी बात नहीं हुई थी. सो यू नो गेट द फीडबैक कि ओके यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग इन अ good direction. Then and when I started getting a lot of love and appreciation from everybody, then I became a little consistent with those videos and thing, and then there's no looking back. कभी भी ऐसा टाइम आया है जब आपको ऐसा बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा हो, बिकॉज यू आर अ इन्फ्लुएंसर, यू आर फिजियोथेरेपी, यू आर अ मदर, यू आर अ वाइफ, सो कभी भी ज़्यादा हेक्टिक लगा है ये लाइफ आपको? हेक्टिक ऑफ कोर्स हो जाता है, बहुत बार हो जाता है, अगर ना बोलूँगी तो झूठ होगा. बट आई थिंक वी ऑल विमेन आर ब्लेस्ड विद अ सुपर पावर. हम मल्टीटास्क करने के लिए ही बने हैं. एक काम तो आई डोंट थिंक कोई भी औरत करती है. आप अपनी माँ को देख लो, अपनी मौसी को देख लो, अपनी सास को देख लो, खुद को देख लो. यू आर नॉट डूइंग वन वर्क. आई थिंक वी ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी. गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद दैट कैपेबिलिटी एंड पावर. So we are those super women, I guess. We are able to do it. So yes, at times it becomes stressful. At times it gets, really hectic. और कभी कभी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को एक स्टेप ऊपर प्रायोरिटी देना है. बच्चे को, हस्बैंड को, फैमिली को, काम को, इंस्टाग्राम को, पेशेंट्स को. तो बट देन आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल. आई हैव अ टीम of doctors who work with me, and I have good staff and people, or as a team we are able to do it. At times difficult hota hai, but then you're through it. And actually jab aapko kaam mein maza aane lage, when you start loving what you do, so it becomes good. How does patient feedback affect physiotherapy? Of course it does. I think हर treatment में ये useful होता है. So as you know, like every individual is different. You are different. I am different. अगर एक ही बीमारी दो अलग इंडिविजुअल को है तो दोनों के सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं. तो दोनों को कौन सा ट्रीटमेंट सूट कर रहा है वो डिफरेंट होगा. तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो every 4 days, every 2-3-4 days I take a feedback and I see the prognosis, how the patient is reacting to the particular treatment, और क्या prognosis है. तो feedback from that patient is definitely very important. उसके हिसाब से आगे का line of treatment we decide. Okay. So with the patients जिनका प्रोग्रेस स्लो होता है, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो या फिर कैसे कम्युनिकेट करते हो अबाउट द फिजियोथेरेपी? सो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक ट्रीटमेंट जो कि हर इंसान के लिए इफेक्टिव है, लेकिन वो एक इंसान के लिए इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है. अब उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं. लाइक मैं एक बीमारी ट्रीट कर रही हूँ, बट देयर इज अंडरलाइन एनी अदर डिसेबिलिटी और एनी अदर डिजीज विच इज़ हैम्परिंग इट. सपोज आई एम ट्रीटिंग जॉइंट पेन. अब मैं जॉइंट पेन ट्रीट ही कर रही हूँ, बट देन पेशेंट हैज़ विटामिन D3 डेफिशिएंसी एंड डायबिटीज़ इटसेल्फ. तो उसके वजह से वो उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से असर नहीं कर रहा until unless I treat that also. So लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वहाँ पे आती हैं
you know. So आपको उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आई हैव टू गाइड द पेशेंट अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऑल्सो, कि आप ये चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाइए, अगर आप ये करते आ रहे हैं अब तक तो ये मत करिए और ये स्टार्ट करिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ से अगर स्लो प्रोग्नोसिस है तो आई ट्राई टू फिगर आउट कि प्रॉब्लमैटिक एरिया क्या है, why is this not working. So that comes in wherein I communicate with the patient. Communication is important. So that is, you know, I think what is needed with all the doctors. I think एक बार treatment लिख के छोड़ देना is not the solution. You have to keep in touch with the patient. You have to ask for feedbacks, ask for solutions कि क्या आप ये कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, आपने ये exercise की, is this exercise suiting you also. So that is how we get to know. सो 2019 में सबका लाइफ काफ़ी चेंज हो गया था विद द कोरोना. लाइक हाउ डिड इट अफेक्ट लाइक योर प्रोफेशन ड्यूरिंग कोविड-19? Of course it did. It did big time. Because कोविड के पहले तक सब नॉर्मल था. सुबह उठना है, क्लिनिक जाना है, पेशेंट देखना है, घर वापस आना है. कोविड में आई थिंक सबसे बड़ा चेंज जो हमारे सोसाइटी में, एंड एज अ डॉक्टर इफ़ यू आस्क, जो चेंज आया, आई थिंक ऑनलाइन कंसल्टेशन केम इनटू द फोकस, केम इनटू द बिजनेस, जहाँ पे पीपल वर लाइक ऑनलाइन. मुझे भी नहीं पता था कि ओके ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इतना तो नहीं दिमाग में था कि इतनी सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक ऑनलाइन थिंग केम इन एज अ बोनस, आई वुड से, बिकॉज आज के डेट में इफ़ यू सी, आई of course from Instagram and from various other platforms I get online consultations, and I've been giving online consultations throughout India. But ये कोविड से ज़्यादा आई थिंक आया है. वहाँ पे लोगों ने अप्रोच किया कि ठीक है हम नहीं आ सकते आपके पास, पीपल वर स्कैर्ड टू मूव आउट, तो हम नहीं आ सकते, आप फ़ोन पे बता सकते हो क्या, आप वीडियो कॉल बता सकते हो. आई थिंक जूम कॉल्स केम इन टू द बिजनेस. सो जूम कॉल पे आप वीसी करके आप फोटोग्राफ्स भेज के हमें ये प्रॉब्लम है. तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग चेंज दैट हैज़ हैपेंड इन COVID and because of COVID. And I think it is good also for people who cannot come to you. Like if a person is sitting in Delhi and he wants a treatment from me or he wants a consultation from me, so he can easily get it. We have Zoom call, we have so many facilities where we can communicate and, you know, line up the treatments. सो ड्यूरिंग दैट टाइम, कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ था, आई थिंक उनको भी ज़रूरत पड़ी होगी फिजियोथेरेपी की. या ऑफ कोर्स. एंड सिर्फ आई थिंक जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था वहाँ पे मेरा क्लिनिक बंद था. उसके बाद थ्रू आउट मेरा क्लिनिक खुला था. वी यूज टू वेयर दोज किट्स, प्रॉपर मास्क एंड हाँ PPE किट्स पहन के. आई थिंक सारे हॉस्पिटल्स, ऑल यू नो हेल्थ लाइन वर्कर्स एंड एवरीबडी वर ऑन देयर टोज. एंड कोविड के बाद इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट ना पूर्वी, ये एक चेंज आया. लॉट ऑफ जॉइंट पेन्स इज़ हैपनिंग इन द न्यू यू नो जनरेशन. ये जो नए यंगर लोग हैं, ये कोविड के बाद बहुत आ गया है. अब इसका रीज़न आप कुछ भी बोलो, बट काफ़ी लोग आने लगे विद जॉइंट पेन एंड ऑल. So that is one change that also happened, and yes, I was there throughout working. So what is that one advice that is very effective with patients? I think when it comes to treatment for physiotherapy or anything, any lifestyle modification, any changes you bring considering your health, I think one thing that is important is consistency. Over a night, nothing is going to change. आप कुछ भी बोल लो, कोई एक्सरसाइज बोल लो, कोई हेल्थ पैटर्न चेंजेस बोल लो, एनी मॉडिफिकेशंस, एक दिन करके आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे. इट इज़ नॉट अ मैजिक वूंड कि आपने छड़ी घुमाई और सब पलट गया. वैसा नहीं होने वाला है. व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, अगर स्ट्रेंथनिंग है या फिर कोई भी रिकवरी है, रिहैबिलिटेशन है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन, एफर्ट फ्रॉम द डॉक्टर एंड द पेशेंट बोथ. एंड कंसिस्टेंसी इज़ लाइक एवरी डे आप वो करिए, उसको आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एक्सरसाइज और इसको इतना इम्पोर्टेंस दीजिए अपनी लाइफ में कि अगर एक दिन नहीं हो वो चीज़ तो आपको गिल्ट फील हो कि ओ शिट, आज I could not work out, I could not exercise, या this thing could not happen because this thing happened. So that I think has to be there, और वो खुद से ही करना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है to get results. Consistency comes with mental strong mind. आपका strong होना चाहिए. तो people who have mental health issues, तो आपको क्या लगता है वो physical health पे उनके affect करता है?
ऑफ कोर्स 100%। आई थिंक अगर आप हेल्थ को एक साइकिल पकड़ो तो उसके दो पहिए हैं, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एक भी पहिए में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी गाड़ी साइकिल नहीं चल पाएगा। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मेंटल एंड फिजिकल गो बोथ गो हैंड इन हैंड। बहुत ही ज़रूरी है दोनों का ठीक रहना, और उसका असर ट्रीटमेंट पे पड़ता है ऑफ कोर्स। सो व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रांग, योर हेल्थ इज़ गुड एंड वाइस वर्सा। सो ये जो एडवांसमेंट्स है लाइक हाइड्रोथेरेपी, नीडलिंग एंड टेपिंग, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? See, when it comes to hydrotherapy, I would say it is a blessing in terms of the treatment and results it give, because a lot of treatments, rehabilitation, strength training, या फिर आप recovery physiotherapy की बात कर लो, hydrotherapy gives amazing results. Taping has a very important role if you talk about the athletics and the sports physiotherapy. Also for the person who is working out a lot, so taping is also very common. So does needling. Needling का भी अपना बहुत ही important role है, and it gives very good results. So all these are advances. I think with टाइम दीज थिंग्स आर कमिंग, और ये एक अच्छे फिजियो की निशानी होती है, या कि आप सीखते रहो टाइम के साथ। देर इज़ नो बैरियर टू लर्निंग, यू नो, यू शुड बी ओपन टू लर्निंग। जितने भी रीसेंट चीज़ें आ रही हैं आप वो सीखो और ट्रेन करो खुद को, एंड ट्राई प्रोवाइडिंग दैट टू योर पेशेंट्स। बीट हाइड्रोथेरेपी, नीडलिंग, कपिंग, टेपिंग, ये जितनी चीज़ें आई हैं, दिस इज़ ऑल वेरी गुड। So you stay up to date with all Of course I do. I follow a lot of journals. हमारा काउंसिल है, इंडिया का काउंसिल है IAP, एंड वी हैव अदर काउंसिल्स इन अदर कंट्रीज एज वेल। सो उसके जर्नल्स फॉलो करती हूँ। जो भी रीसेंट एडवांसमेंट्स आते हैं, आई ट्राई टू स्टडी, आई ट्राई टू लर्न। जो भी कोर्सेज आते हैं, आई ट्राई टू डू दैट, टेक आउट टाइम कि अगर हाँ ये एक वर्कशॉप है या कॉन्फ्रेंस है, वी कैन डू इट। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नहीं किया तो पीछे रह जाएंगे। एंड बिकॉज रीसेंट एडवांसमेंट्स आना ज़रूरी भी है, आने भी चाहिए और आ रहे हैं, तो it is very important to stay up to dated, you know. Yes, because Instagram में we also see cupping and ऐसे We people. do cupping. Cupping से भी बहुत जल्दी से, अगर आपका बहुत persistent stiffness, spasm बहुत दिन से है, cupping से बहुत easily निकल जाता है। When it comes to cupping, you know, it gives very good results. It, you know, uplifts the tissue. तो अगर वहाँ पे blood circulation रुका हुआ है बहुत टाइम से, you know, it gives that enhancement and it gives very good results. Cupping also had good results. What is rewarding in this profession? Like आपको कब एकदम overwhelmed या फिर एकदम ऐसा फील होता है कि yes अभी मुझे बहुत rewarding फील हो रहा है? I think the blessings and love from the patients, as I told you, जब आप किसी ऐसे इंसान जो चल नहीं पा रहा उसको चलाओ, तो वो जो आपको प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, स्माइल मिलता है, दैट इज़ वेरी यू नो हेल्प, यू नो, दैट हेल्प्स यू ग्रो, मोटिवेट करता है और काम करने के लिए। तो जब मैं आपने जो मुझे पूछा कि आपको स्ट्रेसफुल नहीं होता है, इतने सारे रोल होते हैं प्ले करने के लिए, मदर, वाइफ एंड इन्फ्लुएंसर, एवरीथिंग। सो बाय द एंड ऑफ द डे, इफ आई एम हैविंग अ गुड डे एट वर्क एंड आई एम यू नो एबल टू गिव माई पेशेंट्स द रिजल्ट दे वॉन्ट, तो वो जो सुकून की नींद आती है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिकॉज कोई भी इंसान जो चल नहीं पा रहा, सपोज आपका हाथ है, मैं एक दिन बांध दूँ अगर, और एक ही दिन आप खाली मूव नहीं कर पाओ उसको, तो हाउ वुड यू फील एंड हाउ यू नो बैड यू विल फील। तो यू नेवर नो वो पर्सन कितना सफ़र कर रहा है। तो उसको अगर आपने चला दिया, आपने उसको उस दर्द से फ्री कर दिया, सो द ब्लेसिंग्स एंड लव दैट आई गेट, आई थिंक दैट इज़ अनमैचेबल एंड अनबीटेबल। So there are recently many advancements in physiotherapy like hydrotherapy, needling and taping, and cupping. So what is your opinion about it? Okay, so coming to hydrotherapy, one by one चलते हैं। तो hydrotherapy is a blessing, I guess, and it has been there since a long time now. Recently 5-6 years में थोड़ा ज़्यादा famous हुआ है, wherein the celebrities and the famous people, you know, talked about it. Therein ज़्यादा लोगों को पता लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, but it was there since a long time. And hydrotherapy gives very 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 good results when it comes to strength training, rehabilitation and athletes recovery part. So आप अगर किसी भी फेमस एथलीट्स या प्रोफेशनल को पूछो, दे ऑल प्रेफर हाइड्रोथेरेपी एंड इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स। कमिंग टू टेपिंग, टेपिंग इज़ अ टेक्निक जहाँ पे आपको
टेप्स होते हैं, दोज आर रिजिड टेप्स, आप अप्लाई करते हो ऑन द पर्टिकुलर पार्ट अगर वहाँ पे इंजरी होती है तो, या टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज. सपोज आपको आज इंजरी हुई है एंड यू आर एन एथलीट एंड यू हैव अ मैच अगेन टू प्ले, सो वी डू टेपिंग सो दैट देयर इज अ सपोर्ट देयर एंड पेन कम होता है एंड गिव्स अ लिटिल रिलीफ टू द एथलीट एंड सपोर्ट. So that is how taping works, and it gives amazing results, and all the people are following it. And this is one practice which is like in the business nowadays. When it comes to needling, needling is like बहुत ही fine needles होती हैं, the very fine needles, and if done correctly by a trained person, और हमेशा उसी से कराइए जिसके पास सर्टिफाइड ट्रेनर हो, वो सर्टिफिकेट हो उसका करने के लिए, बिकॉज नाउ डेज मैल प्रैक्टिस भी बहुत हो रही है, हर कोई कर रहा है. सो इट्स बेटर बिफोर गोइंग इन टू दैट यू चेक कि वेदर द पर्सन इज सर्टिफाइड इन दैट और नॉट, बिकॉज that pricking the needles has to be in such a way. It is called dry needling, not needling, dry needling. Dry why? Because blood नहीं आना चाहिए when you're needling. So imagine you're piercing something but blood is not there. That is the magic and the beauty of that technique, कि आप needles डालते हो, along with that you stimulate that particular part so that you get better results in terms of pain relief and spasm. So that is a very good thing. It gives amazing results. And coming to cupping again, it is wet and dry both. Wet may you prick the particular part and then you apply cups so that the stagnated and the blood comes out and you wipe it. And the dry cups are without the cuts, जहाँ पे आप सिर्फ tissues को uplift करते हो and to reduce the spasm and the stiffness and on that part. So, have you ever collaborated with healthcare professionals? Of course, I have. Being in this field for so many years, I have a lot of colleagues and friends who are doctors. So we keep doing a lot of events. Recently, World Health Day पे भी हमने free health checkup camp किया था, wherein we had a team of doctors from various specializations and field, nutritionists, eye specialist, homeopathic doctor, and everybody. So we had a team of doctors and we did a health checkup camp जहाँ पे free में patients को consultations दिए हम लोगों ने. तो ऐसे health checkup camps साल में कम से कम 3 से 4 बार मैं करने का ट्राई करती हूँ, जहाँ पे more than 100 patients in one go I try seeing and giving them free consultations as well. So yes, we do it. Any advice that you would want to give to people who are physically impaired related to mobility? I guess I would advise that mobility vehicles, are a blessing to you all. पहले बहुत पहले तो ये सब चीज़ें इतनी advancements नहीं थी. Now that with the help of technology and everything, we have this facility. Make the best of it. अगर आपको कुछ भी problem है, आपको कहीं जाना है, you want to walk or you're not able to walk, so you have these things. या फिर आपके knees में pain है and you have a long distance to cover, like in the airports, malls and everything. You have this facility. Make the best of it. इसमें कुछ भी बुराई नहीं है. So I think yes, it is a blessing. Thank you so much, Dr. Shukla, for being our guest. It was an honor speaking with you. Same here, Purvi. It was amazing. Yeah, hopefully after this podcast, people will move more and live more. Absolutely.